गुड इवनिंग और खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं तहसीन असलम। आपके लिए विल्स और ट्रस्ट का प्रोग्राम लेके हाजिर हुई हूँ। नाजरीन, ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें मैं आपकी कॉल्स भी लेती हूँ। कोई भी सवाल हो आपके पास विल राइटिंग या जायदाद की प्लानिंग के बारे में, तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए। कोशिश करें अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अभी से ही फ़ोन करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप आखिरी सेगमेंट तक इंतज़ार करते हैं तो मैं सबकी कॉल्स नहीं ले पाती हूँ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के अंदर मेरी कोशिश होती है कि आपके तक मैं इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ, अवेयरनेस लेकर आऊँ और आपको बताती रहूँ कि कोई कानून में अगर कोई चेंजेस आई हैं और आपको कैसे अफेक्ट करती हैं, आपकी जायदाद के जो मसले मसाइल है उसके ऊपर कैसे अफेक्ट करती हैं। और वसीयतनामा, ज़ाहिर है कि वसीयतनामा क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ट्रस्ट्स कैसे बनाने चाहिए और उनका क्या फ़ायदा है। तो ये होता है मेरा मकसद। याद रखें, ये लाइव शो है, इसमें मैं आपकी कॉल्स भी लेती हूँ। कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन करें। तो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से मैं आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ कि क्या चेंजेस आ रही हैं 6 अप्रैल के बाद, यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स एग्जेम्पशन में और जो प्रोबेट की फ़ीस है उनमें भी। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और ये हम सबको अफेक्ट करती है। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त जो यूके ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, चाहे इस कंट्री में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, ये बातें आपको अफेक्ट करेंगी डेफिनेटली, क्योंकि जिसने जो भी इस दुनिया में आया उसने तो जाना भी है। मगर पहले मैं एक कॉलर से बात कर लूँ। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं ट्रस्ट बनाता हूँ जी और मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने लेट्स से 80,000 की ली थी सम टाइम अगो एंड आई पुट इट इनटू अ ट्रस्ट, बट आज की उसकी वैल्यू है 4,50,000 450,000. So when I form the trust, will I have to pay some form of tax between the 80,000 and the 450,000 Right. when at the stage of formation of the trust? Right. What sort of trust are you talking about? Which one? And which property is this your main residence? Yes. Well, no, it's main residence, but it's rented out. So how can it be your main residence but it's rented out? No, sorry. Yeah, I don't live there, yes. But it's my main property, and then I rent it out. Okay, all right, okay. So as long as it's at at the council tax and everywhere else, it's registered as your main residence, it would be counted as your main residence. Please tell me, are you married? Single. You're single. Are you divorced, or have you ever been married, or are you widow? Divorced. Divorced, okay. So your inheritance tax exemption limit is 325,000. Okay. And the increase in your exemption, the increase in the exemption on the 6th of April will not apply to you because it will only apply to legally married couples. Okay. Okay. So your exemption limit will remain at 325,000. So, which means that if your property is now worth, did you say 450,000? Yes. Yes. And you put it into the trust. Have you already got a trust? No, I'm thinking of forming one. Okay. Well, if you form a living trust, which means that this property is 325,000, but it's above the exemption limit. Do you ever intend on going back to live there? Not really, no. No. Okay. I would suggest that you treat it as an investment property then. Yes. Right? And do other plans with. Do you have another property that you own that you live in?
Well, I'm thinking of getting another buy-to-let property very soon. Okay, so when you have another buy-to-let, will you? So you won't be living there. Where will you No. live? I'll be living in my parents' family home. Oh, right. So you're building up a portfolio of properties. Correct, yes. Okay. I suggest that you transfer your structure to a limited company structure. Okay. Right? So instead of having the properties in your personal name, you put them into a company. Okay. And first of all, you'll be able to continue to take the rental income in the form of a salary. Okay. You'll be director of the company. You'll draw a salary from the company, Yes. and then secondly, you will wrap this company up in a special trust. Okay. Which means, and it's only one trust. It has no upper limit, so it doesn't matter what the value of your estate is. Okay. And it will immediately become inheritance tax free. Right. Okay, so you don't sound very old. You sound like a young person. I'm 45. Yes, so you're young. So you're building up your portfolio, which means that if you start this structure, you can keep adding to this portfolio, Okay. and it doesn't matter how large your portfolio becomes, it'll always remain inheritance tax free. Right. Now, just coming back to my question. So, as I said, someone suggested to me that when I do form the trust, I'll have to pay capital gains tax on the fact that the flat is worth now 450,000 when I wrote it for 85,000, for example. Is that true? It's not true. No, because there are certain reliefs that can be used when a company structure is set up. There are certain reliefs that are used, tax reliefs, which means you won't have to pay any capital gains tax or stamp duty. Right, okay. So when you say I won't have to pay any capital gains tax for any stamp duties, I mean, if I buy the second property, I'll have to pay stamp duty on that. Obviously, that's a new purchase, isn't it? We're talking about a transfer of an already existing property that you personally own into the limited company structure. But let's say my situation changes. I meet someone and I get married. Then will the trust remain as it is? Yes, I mean that's the best thing to do, to put it into the trust before you actually get married, because once you're legally married, then your partner has a claim on whatever's in your personal name. But if you've already put it into a company structure and wrapped it around with a trust, then it's outside of your personal estate. Sure. Wonderful. Thank you so much for your invaluable advice. Thank you very much. Thank you so much. नाज़रीन, इस तरह की कॉल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि व्यूअर्स बहुत गौर से हमारा प्रोग्राम देखते हैं और ज़ाहिर है कि उनको फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जी कि जब जो भी कॉलर्स करते हैं हमें फ़ोन, और बहुत से व्यूअर्स जो नहीं भी करते, वो हमारी बातें सुन के वो रजिस्टर करते हैं दिमाग में, उसके ऊपर गौर करते हैं और फिर कांटेक्ट करते हैं और अपना विल्स और ट्रस्ट वो डेफिनेटली बनाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, वो अपने मसले ज़रूर हल करते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले हफ्ते हमने बताया था कि प्रोबेट फ़ीस ये इंक्रीज़ हो रही हैं। प्रोबेट की फ़ीस गवर्नमेंट ने पहले तो रखा हुआ था, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है प्रोबेट रजिस्ट्री, पहले तो फ़ीस थी 215 पाउंड, 215 पाउंड। जब हम प्रोबेट के फॉर्म्स सबमिट करते थे प्रोबेट रजिस्ट्री में, तो साथ हमें चेक भेजना होता था 215 पाउंड का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस। अब वो लोग भी काफ़ी होशियार हो गए हैं। वो लोग कहते हैं कि अब हमने फ्लैट फ़ी नहीं रखनी, अब हमने जायदाद की वैल्यू के मुताबिक फ़ीस रखनी है। तो उनकी फ़ीस मैं बताती चलूँ कि अब बिलो 50,000 जिसकी जायदाद है,
50,000 पाउंड से कम जिसकी भी जायदाद है उसके उसी तरह फीस होंगे 215 पाउंड। मगर जिसकी 50,000 से लेके 3 लाख तक के प्रॉपर्टी जायदाद, वो 300,000 उसकी 300 पाउंड उसकी फीस होंगी। और जिसकी जायदाद 300,000 पाउंड से लेके 500,000 पाउंड तक है उसकी 1,000 पाउंड फीस होगी। जिसकी 500,000 से लेके 1 मिलियन तक है उसकी 4,000 फीस होंगी। 99% जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, कम से कम उनकी जायदाद वो इसी कैटेगरी में है बिटवीन 300,000 and 2 million। और ये बढ़ती जाती है। जिसकी भी जायदाद 1 मिलियन से लेके 1.6 मिलियन तक है वो 8,000 पाउंड उसकी फीस है। 1.6 से लेके 2 मिलियन तक 12,000 पाउंड फीस है, 12,000। और जिसकी 2 मिलियन से ज़्यादा है उसकी फीस है 20,000 पाउंड। 20,000 पाउंड तो ये लंप सम जायदाद में से प्रोबेट रजिस्ट्री को जाएगा। इसके बाद लीगल फीस होंगी। लीगल फीस आप तो जानते हैं कि ऑन एवरेज बिटवीन 3 and 7% जायदाद की वैल्यू के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। तो अगर हम से फॉर एग्जांपल 2 मिलियन पाउंड का इस्टेट है तो अगर एवरेज 4% भी चार्ज करें लॉ फर्म्स तो ये 80,000 पाउंड्स तो सिर्फ लीगल फीस में जाएंगी। 80,000 पाउंड्स, 80,000 पाउंड तो लीगल फीस में जाएंगी। ऊपर 20,000 पाउंड ये लगेगा प्रोबेट की फीस, 100,000 पाउंड चला गया। उसके ऊपर फिर इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। तो ये सभी बातें, और ये बातें नाज़रीन आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ना एक दिन तो 100% गारंटीड है कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है। सिर्फ ये नहीं पता कि कब। और ये फीस आपकी जायदाद के ऊपर अप्लाई करेंगी, इनहेरिटेंस टैक्स अप्लाई करेगा, प्रोबेट फीस अप्लाई करेंगी, अनलेस कि आप अपनी जायदाद की प्लानिंग नहीं करते। अगर आप नहीं करते हैं तो ये फीस अप्लाई करेंगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से जायदाद की प्लानिंग करते हैं तो फिर ये फीस हम बचा सकते हैं। दैट्स द पॉइंट कि अगर सोच समझ के हम जायदाद की प्लानिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एडवाइस लेके, तो आपकी ये सभी जितनी भी फीस है प्रोबेट की भी, क्योंकि जब ट्रस्ट के अंदर डालते हैं जायदाद, जो भी ट्रस्ट के अंदर जायदाद होती है उसके ऊपर प्रोबेट नहीं होता। जो भी जायदाद ट्रस्ट के बाहर है और आपके पर्सनल नाम पे है वो उसके ऊपर डेफिनेटली प्रोबेट होता है। और जो भी जायदाद ट्रस्ट के अंदर अगर प्रोबेट नहीं होता तो फिर लीगल फीस भी नहीं होंगी। और ट्रस्ट के स्ट्रक्चर फिर हम यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस टैक्स बचाने के लिए भी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सभी बातें सीरियसली हम लें और पुट ऑफ नहीं करें, उसको डिले नहीं करें। मुझे आज बहुत दुख हुआ एक क्लाइंट को मिलके, उन्होंने बताया कि कई सालों से वो लोग मेरा प्रोग्राम देखते थे, वो लेडी भी और उनके हस्बैंड भी, और वो हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि हमें ये बातें गौर करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, हमें अपने विल्स बनाने चाहिए, जायदाद की प्लानिंग करनी चाहिए। तो हस्बैंड बस क्या इग्नोर कर देते थे, कहते थे नहीं अभी हमने नहीं करना, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने विल तक नहीं बनाया, बेसिक विल भी नहीं बनाया, और हस्बैंड का अचानक डेथ हो गया। अचानक कोई इंक्लिनेशन नहीं थी कि ये बीमार है।
उनका अचानक डेथ हो गया। अब ही डाइड इंटेस्टेट, यानी कि विदाउट अ विल। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रोबेट होगा, डेफिनेटली प्रोबेट के खर्चे आएंगे, वकीलों के खर्चे आएंगे, इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। तो कितने दुख की बात है कि उस वक्त इन्होंने अपने आप को भगवान समझा कि ज़िंदगी मौत हमारे हाथ में है, हमारी मर्ज़ी है कि जब हम चाहेंगे तब हम मरेंगे, तब हम इस दुनिया से जाएंगे। क्योंकि जब हम प्लानिंग नहीं करते तो बात तो यही हुई कि हम खुद भगवान हैं और हमारे हाथ में है, हमारी मर्जी है कि कब हम इस दुनिया से जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि अभी हमने नहीं प्लानिंग करनी, फिर कर लेंगे, इसका तो यही मतलब हुआ कि हम समझते हैं कि ये हमारी मर्जी है कि कब हम इस दुनिया से जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, और हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। जिंदगी की हकीकत यह है कि एक लम्हे का हमें नहीं पता कि क्या हो जाना है और कब हो जाना है। यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए प्लीज सीरियसली लें ये बातें। अब तो ये अगर सिर्फ अगर हम प्रोबेट का खर्चा ही देखें, यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इमीडिएटली अपनी जायदाद की प्लानिंग करें। प्रोबेट की फीस ही इतनी है कि ये बहुत सा हिस्सा जायदाद का तो ये चला जाएगा अननेसेसरीली। मेरी ये जो हमारी इंडस्ट्री है विल राइटिंग और एस्टेट प्लानिंग, इसमें हम इनहेरिटेंस टैक्स और ये प्रोबेट फीस और लीगल फीस, ये सारी फीस को हम कहते हैं कि ये वॉलंटरी खर्चा है, क्योंकि हम वॉलंटियर कर रहे हैं ये खर्चा देने के लिए। जब हम ये फैसला करते हैं कि अभी हमने अपनी प्लानिंग, जायदाद की प्लानिंग नहीं करनी, इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से ये फीस जो है वो देना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम तो एक पैनी भी और नहीं देना चाहते, ये तो बिल्कुल ये सारी उम्र हम टैक्स देते आए हैं, सारी ज़िंदगी हम अपनी ये गवर्नमेंट को वीएटी टैक्स दिया है, अब हम एक पैनी और नहीं देना चाहते, क्योंकि इस जायदाद के ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। नाज़रीन, इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, चंद मिनटों के बाद दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। कहीं जाइएगा नहीं, आप अपने सवाल तैयार रखें और उम्मीद है कि सीमा जी भी हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग।
मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. राजनीति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय। राजनीति के गलियारों में अलग अलग नुक्कड़ों पर व्यक्तियों के बीच, धार्मिक संस्थाओं के बीच, कभी कभी राष्ट्रों के बीच या कभी कभी व्यक्तिगत एक राजनीति लगातार चलती रहती है। और यही राजनीति हम लेके आ रहे हैं हर बुधवार शाम 7 बजे आपके एमए टीवी पर। देखना मत भूलिए राजनीति। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल पवन वाल जान वाले। जय माता दी, बोल पवन वाल जान वाले। तेरे भगता कराया जगराता, तेरे भगता कराया जगराता, निमाए तेनू आना। Gateway Gazette is a program about Christian minorities throughout the world. We focus especially on Christian minorities in India and in Pakistan. Watch us on this channel every Thursday, 8:15 p.m. London time. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. गुड इवनिंग और खुश आमदीद नाज़रीन। मैं हूं तहसीन असलम, आपके लिए विल्स और ट्रस्ट का प्रोग्राम लेके हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, लाइव प्रोग्राम है, इसमें मैं आपकी कॉल्स भी लेती हूँ। कोई भी सवाल हो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए। नाज़रीन, लेट्स वेलकम सीमा जी, यू जॉइंड अस, थैंक यू। आई नो आज ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा, यू नो, there was a fire. Yeah, it's horrendous today. Thank you for coming anyway. Thanks. तो ब्रेक से पहले नाजरीन बात हो रही थी प्लानिंग की कि क्यों इतना ज़रूरी है प्लानिंग, और क्या होता है जब हम समझते हैं कि हमारे हाथ में है प्लानिंग और हमारे हाथ में है ज़िंदगी मौत। क्योंकि हम जानते हैं हकीकत ज़िंदगी की ये है कि हमारे हाथ में नहीं है ज़िंदगी मौत। तो मैसेज ये हम देना चाहते हैं कि इमीडिएटली प्लानिंग करनी चाहिए, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। क्या ख्याल है सीमा? वेरी ट्रू। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि मेरा ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, मैं ये पहले ख़त्म कर लूँ, मैं टैक्स के प्रॉब्लम ख़त्म कर लूँ। मैं एक क्लाइंट से मिली तो उसके बड़े टैक्स का प्रॉब्लम है। तो टैक्स का तो प्रॉब्लम देखें ना आप, जो ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है वो आप इंस्टॉलमेंट में या किसी लिहाज से कर दें, बट मौत ऐसी चीज है जो अचानक आएगी जी। तो अगर आप अपनी उसको तो प्लान नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना होता है कि प्लीज जो चीजें आप आराम से कर सकते वो आराम से करें, बट ये एक ऐसी चीज है कि आपके मरने के बाद मतलब आप जायदाद किसको देना चाहते हैं, मौत आपके हाथ नहीं लिखी है। तो ये प्लानिंग बहुत जल्द होनी चाहिए। यू कांट जस्ट वेट एंड थिंक कि मैं कर लूंगा, पहले मैं ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। बिल्कुल 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 जी। तो सीमा, थोड़ी सी हम बात करें, एक्सप्लेन, ये सिनारियो करते हैं जी 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 कि डिफरेंस क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, डिफरेंस क्या है जस्ट विल एंड ट्रस्ट के में, जी जी। और सिर्फ विल क्यों इनफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिनारियो आप शुरू कीजिए जी जी के सिंगल के मैरिड कपल है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक किसी ने सिर्फ विल बनाई हो और समझो हस्बैंड वाइफ है, वो विल बनाते हैं
और विल में लिखते हैं कि उसके बाद बीवी के बाद हस्बैंड के अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो दोनों के बाद बच्चों का हस्बैंड भी सेम विल बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर देखें ना कि पहले तो अगर एक की डेथ हो जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लेकिन प्रोबेट है। हम अक्सर प्रोबेट की बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोबेट। प्रोबेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ पे लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। तो कुछ लोगों को लगता है कि मेरी बीवी है उसका तो हक है, दे डोंट रियलाइज कि इसके लिए भी अगर विल है तो प्रोबेट होगी, इसके भी फीस हैं और मियाँ बीबी में भी प्रोबेट होती है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव कम अक्रॉस क्लाइंट्स जो वो उनके दिमाग में ये है कि ऑटोमेटिकली वाइफ को चला जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू, ऑटोमेटिकली हस्बैंड को भी नहीं जाता। तो कमिंग टू बैक टू द मेन पॉइंट इज दैट जब आप सिर्फ विल बनाते हैं जिंदगी में काम नहीं आती है। अगर समझो दोनों में से एक की डेथ हो जाए और हस्बैंड अकेला रह जाए तो अगर उसकी बैंक्रप्सी हुई तो क्या होगा, सारी जायदाद चली गई, यहाँ विल काम नहीं आएगी। अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो क्या होगा, वहां पे विल काम नहीं आएगी क्योंकि अभी उसका स्टेटस चेंज हो गया, उसकी नई बीवी का हक बन जाएगा जायदाद पे। अगर वो समझो ये कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, ना बैंक्रप्सी हुई, ना वो दूसरी शादी करता है और बीमार होके केयर होम चला जाता है, यहाँ पे अगर वो केयर होम जाता है तो वो उसकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगे क्योंकि केयर होम की फीस बहुत महंगी है। जैसे हम अक्सर हमारे प्रोग्राम में कहते आए कि अगर सोशल सर्विसेज मीन टेस्टिंग करती है, अगर 23,000 पाउंड के ऊपर जायदाद हो तो उस पर कब्जा डाल देती है क्योंकि केयर होम की फीस बहुत महंगी है। यहाँ पे इसकी मतलब इन शख्स की जायदाद जिंदगी में ही कम होनी शुरू हो जाएगी, ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इनके मरने के बाद ज़ाहिरन है अगर इनकी जायदाद एग्जम्पशन से ऊपर है, जो गवर्नमेंट के नील रेट बैंड से अगर ऊपर है, जो फिलहाल 6 अप्रैल से 850,000 हो जाएगा मैरिड कपल, 425 ईच। तो अगर ये 6 अप्रैल के बाद मरते हैं तो दोनों मर जाते हैं, तो अगर इनकी जायदाद 850 से ऊपर है तो पहले तो बच्चों को टैक्स लगेगा, इनको प्रोबेट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्योंकि एक तो विल प्रोबेट में जाती है, टैक्समैन प्रोबेट और टैक्स डिपार्टमेंट दोनों एक साथ, यू कैन से दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे ही प्रोबेट पे विल जाएगी तो वो इतलाक वो इन्फॉर्म कर देंगे टैक्समैन को। टैक्समैन कहेगा मेरे पहले पैसे दो 40%, 40% भी नहीं, आज अभी तो ये भी कह दिया है कि 2 मिलियन के ऊपर 50% भी होगा। सो इट्स लॉट ऑफ मनी। एक तो प्रोबेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सो यहाँ ये नुकसान है सिर्फ अगर विल बनाते हैं। अब और भी बड़ा नुकसान ये है कि देखे ना, प्रोबेट की फीस बढ़ा दी है उन्होंने। पहले जो मर्जी आपकी जायदाद हो 215 पाउंड है और कहाँ अब आपके पास में वो टेबल है कि 50,000 के अगर ऊपर जायदाद हो, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 300, 1,000, 4,000, 8,000, 12,000, 20,000। अब देखिए ना कहाँ 215 पाउंड थे और जो भी 2 मिलियन से ज्यादा जायदाद है उसके ऊपर 20,000। ये सिर्फ प्रोबेट की फीस है और वकील का अलग खर्चा है। अब आप देखें ना इतने बड़े खर्चे और साथ में 40% टैक्समैन मांगेगा और 2 मिलियन से ऊपर है तो वो 50% मांगेगा। तो आप खर्चे देखें तो बाद में बचा क्या, कितना बचा? 40% मुश्किल से about 1/3 चला जाता है खर्चों में। Now from this man's personal name to his children's personal name, वो बच्चों की पर्सनल जायदाद बन गई। अब जब बच्चों की पर्सनल जायदाद बनती है तो अगर बच्चों का किसका डिवोर्स हुआ तो क्या होगा, 50-50 डिवोर्स सेटलमेंट में चली गई जायदाद। अब अगर बच्चों का बैंक्रप्सी हुई, सारी चली गई, केयर होम गए, खत्म। तो ये सब नुकसान है सिर्फ विल बनाने से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विल के साथ साथ आप और भी प्लानिंग करें। जैसे और अगर विल नहीं बना हुआ तो भी नुकसान है, इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, देन गवर्नमेंट की बनी हुई विल है जो हमें जो चाहिए वो नहीं होता उसमें। That's it, हाँ जी। सो विल बनाना भी जरूरी है बट विल के साथ साथ
और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बेसिकली हम ये इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं कि सिर्फ बेसिक विल के साथ भी गारंटी नहीं है कि उन्हीं लोगों को मिलेगी जायदाद जिनको आप चाहते हैं। तो विल में आपने कुछ लिखा हुआ है मगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई हैं तो अगर केयर होम चलेंगे जायदाद चली गई, तो गारंटी नहीं है कि जो जायदाद आपने विल के अंदर लिखी थी वो उसी को मिलेगी जिसको आपने चाहता। इसका फिर हल क्या है नाज़रीन? ये हमने जो सिनारियो अभी सीमा ने पेश किया, आप अस्यूम करें कि ये जायदाद थी 3 मिलियन पाउंड की, 3 मिलियन। इसके ऊपर सिर्फ इनहेरिटेंस टैक्स लाइबिलिटी बनती है ऑलमोस्ट $1 मिलियन, 900,000, ऑलमोस्ट $1 मिलियन पाउंड सिर्फ इनहेरिटेंस टैक्स ही बनता है। फिर लीगल फीस, फिर प्रोबेट फीस। इसका हल, जैसे मैं ब्रेक से पहले बता रही थी कि हर चीज़ का हल होता है, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। इस सिनारियो में आप अस्यूम करें कि एक मेन रेजिडेंस है 500,000 का और बाकी की जायदाद 3 मिलियन की जायदाद है और बाकी की जायदाद 2.5 मिलियन ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है। और जिन कॉलर ने ब्रेक से पहले फ़ोन किया था उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो गौर से सुने बात और याद रखें ये लाइव शो है। पहले हम कॉलर से बात कर लें। हेलो, गुड इवनिंग। मुझे बात पूछना था कुछ, पूछ जी, सकता हूं? जी पूछिए। अब आप ऑन एयर बात कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, मुझे ये पूछना था, मैंने ना 2007 में डिवोर्स हुआ था, राइट, मेरी वाइफ के साथ। तो 2007 में डिवोर्स हुआ था, आधा मकान मेरे नाम पे था, आधा मकान उसके नाम पे था। तो मैंने उसके नाम पे पहले अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी। अच्छा। तो उसकी डेथ हो गई जी। तो उसने कोई बिल वगैरह कुछ नहीं बनाया। अच्छा। उसमें मुझे हिस्सा है मेरा उसके अंदर या नहीं है? नहीं जी, डिवोर्स के बाद तो हिस्सा नहीं होता है। डिवोर्स के बाद हिस्सा नहीं होता? नहीं जी। लेकिन जो पहले थी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी थी वो मेरे और दोनों के नाम पे थी प्रॉपर्टी। जी, बट आपने तो उनको गिफ्ट कर दिया था ना, फिर अपना हिस्सा भी उनके नाम पे आपने ट्रांसफर कर दिया था while she was alive। ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई, उसके मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं। तो किसको मिलेगा वो? आपके बच्चे थे उनके साथ? नहीं, बच्चे नहीं थे। नहीं, बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे तो फिर उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनकी फैमिली में, उनकी फैमिली की साइड पे उनको मिलेगा। जो उनकी फैमिली, सिस्टर और ब्रदर जी, जो वो अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं उनको मिलेगा। नहीं, माँ बाप जिंदा नहीं है। तो फिर उनके बहन भाइयों को मिलेगा, उनके भाई बहनों को मिलेगा। तो उसने कोई बेल बनाई हो तो मुझे कैसे पता चलेगा उसने बनाई हुई है कुछ या कुछ नहीं बनाया? क्योंकि उनकी जो भी जायदाद थी उसका प्रोबेट होगा। ठीक है, तो आप प्रोबेट जब प्रोबेट, ये जो हम बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट, जब बेनिफिशियरी को जायदाद बांटी जाती है वो प्रोबेट की प्रोसेस के जरिए बांटी जाती है। गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है प्रोबेट रजिस्ट्री। जब प्रोबेट होता है तो अगर उन्होंने विल बनाया हुआ है तो वो इट बिकम्स पब्लिक नॉलेज। ठीक है जी, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी जाके देख सकता है उनका विल। अगर नहीं भी बनाया हुआ फिर भी आपको पता चल जाएगा कि उनका विल है था या नहीं था। तो कैसे पता चलेगा वो? जी, आप प्रोबेट रजिस्ट्री में जाके उनके जहाँ वो रहते थे या जहाँ उनकी फैमिली रहते, कब उनका डेथ हुआ था? अभी साल हुआ, 1 साल हुआ। हाँ जी, जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया में प्रोबेट रजिस्ट्री में जाके तो आप चेक कर सकते हैं कि इस खातून का उनका नाम, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ डेथ देकर, तो कि इनका प्रोबेट अभी हुआ है कि नहीं। ठीक है जी, तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। क्या नाम बताया आपने उसका? जी, प्रोबेट रजिस्ट्री। स्पेलिंग बताओगे आप? प्रोबेट रजिस्ट्री भाई। I'm sorry, I can't. This is we're time limited,
प्रोबेट रजिस्ट्री आप रिकॉर्ड करके फिर सुन लीजिए। और ये ये काउंटी कोर्ट्स के ऑफिसेज में ये बेस्ड होते हैं। सभी काउंटी कोर्ट्स की ऑफिसेज में इनका ऑफिस एक होता है। ओके जी, ये जो कोर्ट का ऑफिस होता है उसमें पता चल जाएगा कि उसने कुछ बेल बनाई है या नहीं बनाई। काउंटी कोर्ट का ऑफिस जी। ओके तो उसने कुछ बनाया होगा तो पता चल जाएगा तो बनी जी जी ना जी। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बाय बाय। या दिस इज बात हो रही थी प्लानिंग की जी जी। हाँ जी। जो मेन रेजिडेंस है इसको हम डालेंगे एक लिविंग ट्रस्ट में, जिसका मतलब है कि दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में उसके ट्रस्टीज और बेनिफिशरीज होंगे, साथ वो अपने बच्चों को ट्रस्टी और बेनिफिशरी बनाएंगे। जो कपल हैं उनकी लाइफ में ये फ़ायदा होगा कि जायदाद इज प्रोटेक्टेड। जब दोनों में से एक का डेथ हो जाएगा, सर्वाइविंग स्पाउस जो रह जाएंगे, अगर वो दूसरी शादी भी कर लें या केयर होम चले जाएं या बैंकरप्ट हो जाएं, कोई भी इस जायदाद के ऊपर क्लेम नहीं कर सकेगा। जब इनका डेथ हो जाएगा, बच्चे टेक ओवर कर लेंगे, तो उनकी जायदाद भी उसी तरह प्रोटेक्टेड होगी क्योंकि वो ट्रस्ट के अंदर है। अब उनका अगर डिवोर्स या बैंक्रप्सी होती है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी, कोई थर्ड पार्टी इसके ऊपर नहीं क्लेम कर सकेगा। और क्योंकि ये ट्रस्ट 125 इयर्स के लिए चलते हैं, ये आपकी 4, 5, 6 फ्यूचर की जनरेशंस प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो बाकी की जायदाद अब कैसे प्रोटेक्ट करनी है? ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और ये वाला एग्जाम्पल मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी हमारे क्लाइंट्स इसी कैटेगरी में हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके पर्सनल नाम में होती हैं और उनको समझ नहीं आती कि इनहेरिटेंस टैक्स कैसे बचाना है। हम सजेस्ट करते हैं कि इनको सबसे पहले एक लिमिटेड कंपनी स्ट्रक्चर में डाला जाए। जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से जब डाली जाती हैं, इसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगता है और स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, मगर जिस तरीके से हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स करते हैं उसके स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी और कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगेगा। फिर दूसरा स्टेज, और इसके साथ आप सैलरी ले सकते हैं कंपनी में से, आप उसकी इनकम भी ले सकते हैं एज ए सैलरी, और आप इसको इनकम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट आप बना सकते हैं। मगर कंपनी में डालने से इनहेरिटेंस टैक्स नहीं बचता। फिर सेकंड स्टेज होता है कि कंपनी को एक स्पेशल ट्रस्ट में डालते हैं। जब कंपनी ट्रस्ट के अंदर जाती है, ऑब्वियसली ये कंपनी हाउस पे सारा कुछ होता है, तो ये इमीडिएटली आपकी सारी जायदाद इनहेरिटेंस टैक्स फ्री हो जाती है, जो भी आपने कंपनी के अंदर डाली थी इमीडिएटली। इसके ऊपर कोई 7 ईयर का रूल नहीं अप्लाई करेगा। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, चंद मिनटों के बाद। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India.
Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. Already got your free Brian toy? Now you can collect the all-new Miss Herbert or Stunned Herbert when you buy car or home insurance through Confused.com. जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोल पवन वाले जान वाले जय माता दी बोल पवन वाले जान वाले तेरे भगता कराया जगराता तेरे भगता कराया जगराता निमाए तेनू आना Gateway Gazette is a program about Christian minorities throughout the world. We focus especially on Christian minorities in India and in Pakistan. Watch us on this channel every Thursday, 8:15 p.m. London time. गुड इवनिंग और वेलकम बैक नाजरीन। ये आखिरी सेगमेंट है हमारे विल्स और ट्रस्ट का शो। मैं हूँ तहसीन असलम, मेरे साथ सीमा जी हैं और ये लाइव शो है। इसमें हम आपकी कॉल्स लेते हैं। कोई भी सवाल हो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए, अभी से ही फ़ोन करना शुरू करें क्योंकि ये अब लास्ट सेगमेंट है और प्रोग्राम की एंड तक अगर आप वेट करेंगे फिर हम आपकी कॉल्स नहीं ले पाएंगे। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी बातें हो रही हैं क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ, सीमा की ज़िंदगी के साथ, हम सबकी ज़िंदगी के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं। डेफिनेटली किसी को इससे निजात नहीं है। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग की। यहाँ तक हम पहुँचे थे कि जब आप कंपनी अपनी एक स्पेशल ट्रस्ट के अंदर डालते हैं आपकी इमीडिएटली इनहेरिटेंस टैक्स फ्री हो जाती है जायदाद, और इस ट्रस्ट के ऊपर कोई 7 ईयर रूल भी अप्लाई नहीं करता। पहले हम कॉलर से बात कर लें। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। या कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू जी। आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दें पहले। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क हर ए क्वेश्चन। कैन आई आस्क आफ्टर द प्रोग्राम और आई हैव टू कम ऑन टेलीविजन? Well, you're on speaking to me on air now. Okay? You're speaking to me on television now. You don't need to give your name. Because I just want to know because about my will. Yeah. I have got a will about this inheritance tax. I just want to know. It's on average. My husband passed away a couple of years before. It's all on my name. So what shall I do to put that so that there will be no inheritance tax? Is it do I have to put my children on with me or what? Gee, what's the value of your estate? I think it must be five plus. What, 500,000? Yes, yes. Or 5 million? No, not 5 million. 500,000. Yeah, it's more than 5. If I'm planning to sell next year, it will be 5,000, not more than that. Okay, that's right. And that's your property, that's your main residence? Yeah, it is my main residence. Do you have any other assets? No, I don't have any savings or other properties? No, nothing. Okay. Basically, your property is within the inheritance tax exemption limit bracket, okay? Because if your husband passed away a few years ago, your exemption will be going up on the 6th of April. Okay. To 425,000. Okay. His exemption will be 325,000, which you can carry forward and add on to yours. So it'll be 750,000 exemption. Your property is within 500,000. So which means that at the moment there's no inheritance tax liability. Okay. Okay. So you don't need to add your children onto the property. But the problem that you would have is that, let's say if you needed to go to a care home,
Yeah. Social services can take your property. Okay? So that's what you would be affected by. Also, if you had some financial problem in the future, if you became bankrupt, your property can be taken away through bankruptcy as well. So, okay, what shall I do then? Well, you need to put it into a trust. You know this trust that we're talking about, the living trust. Because I missed the half of the program, so I just came home, I just put the telly on, I watched it. Well, let me tell you, Ji, you need to put it into it's a very simple process. We put it into a living trust. Okay. But the benefit of that will be that if you do it now, don't wait until you're really old, because then social services will say that this is deliberate deprivation. Okay? Okay, how do I have to do it? Do I have to go to a solicitor or what? Well, if you continue watching the program, when the program finishes, at the end there will be my advert. Okay. And all the details are on there for further advice. Oh, thank you very much. Thanks a lot. Okay. Because I watched your program last week till end. I couldn't. I don't know. Anyway, I'll talk to you later. Okay, I'll call you after the program finishes. Thank you so much. Thank you. Yeah, I think we can repeat again what are the benefits of a trust. जब कोई अपना main residence living trust में जाता है, so you know when you put your main residence in a living trust, ये living trust में ही डाला जाता है main residence, क्योंकि ये गिफ्ट विथ रिजर्वेशन होता है कि आप इसमें अपने बच्चों को तोहफा दे रहे हैं, बट उस तोहफे को आप यूज भी करते हैं अपनी जिंदगी में। आप बच्चों को तोहफा नहीं दे रहे हैं, नहीं, बच्चों को ट्रस्ट में डाल के दे रहे हैं ना, आप ट्रस्ट को गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उस गिफ्ट पे आप अपनी जिंदगी में उसको यूज कर रहे हैं। सो अब इससे क्या होता है कि जब आप कोई चीज ट्रस्ट में डालते हैं, बैंक्रप्सी इसको हाथ नहीं लगा सकती है। अगर आप ये नहीं कि आप अगर कोई मुसीबत में आ जाए और फिर बनाए ट्रस्ट, तो वो काम नहीं आएगी। ठीक टाइम पे बनानी चाहिए, बीमारी में भी ठीक टाइम पे बननी चाहिए। अब अगर आप दूसरी शादी करें तो भी वो हाथ नहीं लगा सकते, आप अगर केयर होम गए वो भी नहीं हाथ लगा सकते। अगर अभी आपके मरने के बाद आपके बच्चों को प्रोबेट की फीस बच जाती है, लीगल फीस बच जाती है। सो ये ट्रस्ट खून में चलता है, आपके बाद आपके बच्चों का, बच्चों के बाद उनके बच्चों का, और बच्चों को भी इसका 125 साल तक उसका फायदा है। थैंक यू सो मच। अब मेरा ख्याल है ये लिविंग ट्रस्ट और इनहेरिटेंस एक्ट प्लान की बहुत बात हो चुकी है, 10 मिनट रह गए हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट गिफ्टिंग। आपने गिफ्ट की बात की है ना, जब हम ट्रस्ट में डालते हैं हम बच्चों को गिफ्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब हम ट्रस्ट में गिफ्ट करते हैं जी। तो जिसके अपनी लाइफ में लिविंग ट्रस्ट का हम खुद बेनिफिशरीज हैं, हमारी डेथ के बाद बच्चे टेक ओवर करते हैं। गिफ्टिंग की बात मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी तक कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ही अपने हाथों से अपने बच्चों को ये जायदाद देना चाहते हैं। ये बेहतर है भाई, अगर आप अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी में ही बच्चों को दे देंगे, आप अपने हाथ काट के उनको दे रहे हैं। आप उनका फ़ायदा नहीं सोच रहे, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। उनके फ़ायदे के लिए नहीं है अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में ही दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अगर डिवोर्स बैंक्रप्सी हो जाए, वो जायदाद भी उसके अंदर जा सकती है। मैं एक सिनारियो पेश करना चाह रही हूँ। एक कपल, वो दोनों बीमार रहते थे। उन्होंने अपने बेटे के नाम पे अपना एक ही घर था जिसके अंदर वो खुद रहते थे, वो घर अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। बेटा भी उनके साथ ही रहता था। उन्होंने सोचा कि हम दोनों बीमार रहते हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो बच्चे को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, प्रोबेट और वगैरह वगैरह करने की। उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी अपने बेटे को। बेटा थोड़ा गलत रास्ते पे चल पड़ा। he was gambling and drugs and गलत कंपनी में वो मिक्सअप हो गया, वो कर्जों में डूब गया। और क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी, इसके ऊपर कोई मोर्गेज नहीं थी, उसने प्रॉपर्टी के ऊपर रीमोर्गेज किया और पैसे
उसके पास आ गए थे और उसने लुटाना शुरू कर दिया पैसों को, मगर वो कर्जा वापस नहीं दे सकता था बैंक को, उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब कोई रिमाइंडर्स, कोई ख़त भी आते थे अरियर्स के, वो छुपा देता था, माँ बाप को नहीं बताता था। माँ बाप को उस वक्त पता चला जब बेलिफ्स घर आ गए थे घर को रिपोजेस करने के लिए। आज उनकी ये हालत है कि वो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि हमारा बेटा कहाँ है। कितने दुख की बात है। यस, ये तो हम अक्सर कहते हैं हमारे प्रोग्राम में कि प्लीज गिफ्ट ना करें, ट्रस्ट में दे, ट्रस्ट को गिफ्ट करें ताकि आपके मरने के बाद बच्चों को मिले, आपकी जिंदगी में नहीं। और ट्रस्ट के और भी तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप नॉर्मल जिंदगी में अगर कोई गिफ्ट करता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर ट्रस्ट को गिफ्ट करते हैं जहां आप बच्चों को बेनिफिशियरी बनाते हैं, वो आपके मरने के बाद मिलता है उन्हें। इस कैपिटल गेन टैक्स जो जिंदगी में आपके लगेगा आप उससे बच जाएंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। हाँ जी जी। और दूसरी बात यह है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग हैं जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जी जी, और वो उनके अकाउंटेंट्स भी उनको एडवाइस करते हैं कि अपना इनहेरिटेंस टैक्स बचाने के लिए आप अपनी लाइफ में गिफ्ट कर दें और 7 इयर्स के बाद ये इनहेरिटेंस टैक्स फ्री हो जाएगा। बट इट डजंट, वो सिर्फ उसके साथ कंडीशंस बहुत सी लगी हुई हैं। एक कंडीशन ये है कि रेंटल इनकम माँ बाप खुद नहीं फिर ले सकेंगे जी। पहले हम कॉलर से बात कर ले। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें और मेरे साथ बात करें। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी। Yes, I would like to find out about. Yeah, hello. Can you turn your TV volume off first, please? Yeah, I would like to find out about. Hello. Can you please turn your television volume off and then talk to me? I would like to find out about my trust. Yes. I have a property I would like to put into the trust. Okay, ji. I got 5 children. Yes. And recently I have already given one house to my daughter. Right. About 4 years ago. Will that affect anything? Well, I mean, what's the value of that property that you've given away? Well, at the moment about 400. And the property that you live in, what's the value of that? That is also around about 4. Okay. And are you married, Ji? Yeah, Ji, married. Okay. So because you gave it away 4 years ago, it only after 7 years does that become inheritance tax free. Okay. Right? So does your daughter live there? No, we don't live there. We live in that property with our daughter. Yeah, we give it to the daughter and we live with her. You live with her. And what about your main residence? Well, that is rented out. Right. Okay. All right. So so your property is rented out. Basically, the property that you've given to your daughter until 7 years is complete still belongs to you. And because you've gifted it to her and you're living in that property, are you giving her rent? No, we don't. No. So basically you haven't given it away because you're still living there. Okay. The taxman says that you've made a gift but you're still benefiting from it because you're living in the property. Right. The law is that if you've given something away and you're still living there, you've given it to your daughter, you should be paying her a market value rent for that property. Yeah. Right? Which you're not. Yeah. So therefore that property, the 7-year rule will not apply. Okay. So it's still part of your estate. So what shall we do then? Well,
it is quite complicated. I think there's more to it. That there's more complications. I think we need to sit face to face and ask you a lot more questions, and then unravel it. Well, you got to be my number. If you could phone me sometime, and then we could discuss. We'll do that, Ji. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you for your call. Yeah, see, this is the biggest problem we come across. Yes. मेरे कल भी एक क्लाइंट ने कहा कि मेरा अकाउंटेंट कहता है गिफ्ट कर दो, गिफ्ट कर दो, बट वो पूरी बात नहीं बताते हैं कि तुम गिफ्ट तो कर दोगे, बट उस गिफ्ट में रहना नहीं चाहिए फिर. See, this is the biggest problem, that the full advice is not given by the accountant. Yeah, so it's wrong. Yes. तो मगर किसी वक्त ऐसे भी होता है सीमा कि अकाउंटेंट बेचारे एडवाइस तो देते हैं, मगर क्योंकि क्लाइंट्स को सूट नहीं करता वो इग्नोर कर देते हैं. Well, I hope so. But you're right, there are situations where wrong advice is given. Wrong advice is given. Yes. इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे किसी के पास जाओ जो स्टेट प्लानिंग जानते हैं. That's it. तो ये जो कॉलर ने फ़ोन किया है, नाज़रीन हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलें कि जब आप गिफ्ट कर देते हैं, एक फॉर एग्जांपल आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आप उसको गिफ्ट कर देते हैं, या अपना मेन रेजिडेंसी आप उनके नाम पे, बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, यू कांट लिव देयर योरसेल्फ विदाउट पेइंग योर चाइल्ड रेंट. और वो रेंटल इनकम जो है वो बच्चे को डिक्लेयर करना होता है अपने टैक्स रिटर्न्स में, और उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स देना होता है. इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि अब हमने पेपर वर्क कर दिया है तो अब हमें ये टैक्स फ्री हो जाएगा. नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे. 7 ईयर का रूल सिर्फ उस वक्त काम करेगा if you follow the rules. If you pay, if you either you don't live there, only your child is benefiting, but if you are living there, you have to pay a rental income. Yes. तो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को तो नहीं रेंटल इनकम देंगे ना, रेंट देंगे. भाई, दिस इज द लॉ. द टैक्समैन वो चाहता है कि जो इनकम आता है बच्चे को उसके ऊपर मुझे टैक्स दिया जाए. That's the reason. And then ये बहुत गलत सोच भी बड़ी गलत होती है कि किसी माँ बाप की कि हमने बाद में देना है, अभी दे दें तो क्या हुआ. That's another big issue. अगर God forbid इनकी बेटी का डिवोर्स हो जाता है तो उसमें चली जाएगी प्रॉपर्टी. नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा आज प्रोग्राम करने का, बहुत इंटरेस्टिंग कॉल्स आई हैं, तो उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा. प्लीज़ इसको सीरियसली हमारी बातों को लें, और ये आप ही के फ़ायदे के लिए बातें हैं. तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए. ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात हो जाएगी. अब अपना बहुत सा ख्याल रखिए. सीमा की तरफ से और मेरी तरफ से Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं. Abacus Wills and Trust माहिर हैं विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में. हमारी लीगल टीम
आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए है यहाँ on 0845-025-000। स्वागत है आपका प्रोग्राम जन्म कुंडली में। कैसा होगा ग्रहों का हाल आपके लिए, किस तरह से आप ले पाएंगे इनसे लाभ, क्या होगी दशा आपके लिए। देखना ना भूलें जन्म कुंडली विद अनिल शर्मा ऑन MATV। Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Already got your free Brian toy? Now you can collect the all-new Miss Herbert or Stunned Herbert when you buy car or home insurance through Confused.com. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले। जय माता दी बोल पवन वाले जान वाले। तेरे भगता कराया जगराता, तेरे भगता कराया जगराता, निमाए तेनू आना पौ। यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां
तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। रिश्ता तेरा मेरा बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे ये रेशम से खो जाए खो ना जाए हमसे काफिला वक्त का रोक ले, अब दिल से जुदा ना हो। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। चले चौपायों जैसी चाल, रोग से पीड़ित और बेहाल, बंधाए कौन उन्हें अब देर, नैन से टप 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 के नीर सहारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। They said Lord Shankar tried a lot to make Sati understand. I was just doing some self-education yesterday. Lord Shankar said that Ram and Lakshman are the reincarnation of the honest-minded, happiness-bringing Narayan. But when doubt occurs, doubt destroys family ties. Doubt breaks up family into several tiny pieces. Whenever there was a doubt, there was some illusion regarding Sati. Whenever there was an illusion, and that too with doubt to the extent that Lord Shankar said that you have to give an examination. He said, look at this fire. If you walk on it, your feet will burn. Sati asked, do you still want me to walk on it? He said, go, yes, go ahead. If you burn your feet on fire, we will come to know. And Mother Sati, in her moment of weakness, when she has no control of her senses, at that point, Sati becomes Sita. Oh, you went on to trick Lord Shankar. Oh, while Ram has been looking for Sita and he asked some flowers. Flowers, have you seen my Sita? Hey dear, do you know where my Sita went? And when Sati comes in front of Ram in the form of Sita, Ram went on to touch her feet as he recognized her true form, asking her, Mother Sati, what are you doing here alone? Where is Lord Shankar? At that point,
Sati realizes that her illusion is caught. This mistake we commit in our houses too. Lord Shankar said, I can't believe that Sati lied. Yes, I did not take any examination. Sati told him, first I had doubt. Then I created a form of illusion. Then fear was born. And because of the fear, I lied. Brothers and sisters, let us self-evaluate ourselves. In the families, the couples who promised each other in front of fire God that they won't hide anything from each other. You must have read it in the holy scripts that on the request of the husband, a sage gave a fruit to his childless wife, saying that the fruit would bless them with a son. The woman then gave the fruit to her sister and pretended to be pregnant, or fed it to the cows for that matter. Ladies and gentlemen, while listening to my talks, please also do some thinking. Bhajan. Bhajan means service. In fact, the word bhajan itself comes from the word service. When you sing bhajans, hymns, your heart is also happy, isn't it? All worries are gone. All material requirements are left behind. Sati was sacrificed. Daksh said, the father who insults his daughter Lakshmi, the goddess of wealth, will never stay in such a house. They say sisters were found smiling. Not making fun in this case. Smiling in this case means trying to make someone happy. But when you are making fun of somebody, then it is an insult, a kind of violence, my brothers and sisters. When we used to go to the Adivasi areas, then some used to say they don't have mother, some used to say they didn't have father, and say that on earth there is a sky. And at the same time I used to be all in tears. And I feel like, why they don't have parents? Orphan is the person who doesn't have parents. And in this age too, they remember their mummy, daddy, and love them. Sometimes I feel like crying only. I can understand that parents' love is above all, and that sadness had never bothered me. I washed them with love. I said, let me take these kids. Asked Manav Saab. We got 4 to 5 kids. That time Sevadham was not even big. There were holes everywhere, few pillars and a roof above, a very tiny room, and walls were very weak. That time those kids were brought, bathing and washing them. 5 kids were there that time. And then slowly, whenever we used to go to the camp, there we used to listen to the kids. And for those kids, I never felt that I'm not their mother. Young, warm-hearted, inspiring speaker, and always remaining in search of God is Sevak Prashant Bhaiya. Lord Ram and Bharat, when they got separated, the order came for Bharat's coronation. When Bharat came to know about this, he was somewhere outside as he found out that my mother have demanded kingdom for me and have asked my elder brother to go in the forest. He gets really disturbed. He says till today in this world, a mother have never been called a bad mother. It's the son who is termed as bad son or good son. But from today onwards, Mother Kaikai, because of you, now mother will also be termed as bad mother. A mother like you will always be called a bad mother.
See the love of a brother. For 14 years, he never ruled his kingdom, never sat on the throne, didn't become a king. Keeping his brother's slippers on the throne, he ran his kingdom. It hurt him so bad. And a similar story of brotherhood we find in Mahabharata as well. When Yudhishthir goes to drink water from a lake, he finds out that all his 4 brothers are lying dead, unconscious. As he was about to drink water, a yaksh. You might have heard that a yaksh asking different types of questions like who is heavier than earth. He says mother. Who is heavier than sky? He says father. A lot of questions he asks, which Yudhishthir replies. He said, I'll let you drink from this lake. He says, I am happy with the answers you have given to my questions, so now you can make any one of your dead brother alive. Who do you want to bring back? Then Yudhishthir says, I want to make Nakul alive. The Yaksha said, why did you choose him? You could make anyone alive, be it Bhim or Arjun. But why did you choose Nakul among the rest? Yudhishthir said, Nakul is a son from another mother. Among my mother's son I am alive, but no son of another mother is alive. So I want to make him alive. There are so many beautiful descriptions of brotherhood in Ramayana, Mahabharata and other granths. Today, brothers get separated because of small piece of land or small property. For small monetary wealth and happiness, we divide our families. If any one of you have turned against each other because of land, your family ties have almost broken, then today one brother should tell the other, you keep the land, never mind. Just stay peacefully, I want love and harmony. Start making this effort. They say the only thing bigger than money, wealth, affection and fascination is love. Things are worthless while people are priceless. When we start valuing things more over people, we become lonely. जबलपुर की रहने वाली हूँ और जब मैं 10 साल की थी तब बाइक से गिर गई थी। फिर पैर दर्द करता था तो पैर उठा के चलने लगी तो फिर वैसे ही पैर हो गया हमारा। फिर बहुत जहाँ इलाज करवाया कहीं ठीक नहीं हुए। फिर नारायण सेवा संस्थान के बारे में सुना तो फिर यहाँ इलाज ऑपरेशन करवाया तो यहाँ ठीक हो गई। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं आगरा शुकाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से और ट्रक से हो गया था। ट्रक और बाइक के एक्सीडेंट में मेरा हाथ कट गया। तब से मैं बहुत दुखी था। जैसे तैसे ज़िंदगी तो बचा ली, मेरा हाथ नहीं बचा। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद नारायण सेवा का पता लगा। उसके बाद मैं वहाँ शुकाबाद से यहाँ आया। यहाँ हाथ मेरा लग गया है। उसके हाथ लगने के बाद काफ़ी संतुष्ट हूँ, काम कर सकता हूँ। एक्सीडेंट के पहले मैं भी एक डॉक्टर था। बहुत से लोगों का इलाज किया, लेकिन दुनिया का सबसे पहला हॉस्पिटल नारायण सेवा संस्थान है, जो गरीबों को निःशुल्क सेवा देता है। नारायण सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद।
नाम शांतिलाल है, रहना गांव खाकदरा का हूँ मैं जा रहा था इलाज करवाना केसरिया जी, वापिस लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद में मेरे 4 बच्चे हैं, उसको पाल पोषण कैसे करूँगा, बड़ा कैसे करूँगा, मैं बहुत सोचता हूँ। मेरे पाँव कटने के बाद में मैंने सोचा ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं काम काज अकेला नहीं कर पाता हूँ, व्यक्ति मेरे को साथ में चाहिए, कुछ काम मेरे को होता ही नहीं, सब काम काज मेरा बीवी और पापा करते हैं। सोचता हूँ मन में सोचता हूँ पाँव होता तो ये काम कर लेता। मेरे को कोई आदमी ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान में पाँव नकली मिलते हैं, तो फिर मेरा का पाँव का नाप लिया, फिर पाँव लगा दिया मेरा। मैं मेरा पाँव कटने के बाद में कभी उम्मीद नहीं सोची थी मैं चल पाऊँगा। मेरा अभी नकली पाँव बिठाया है तो मैं उम्मीद है चलने की। अभी वैसाखी से चल रहा हूँ, फिर वैसाखी भी छोड़ दूँगा, इतनी उम्मीद है मेरी। नारायण सेवा संस्थान से बहुत धन्यवाद है, मेरे पाँव लगाने के बाद धन्यवाद। पाँव के बिना जिंदगी के मायने कुछ भी तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली संतोष दोनों पैरों के ना होने पर भी हिम्मत हौसला बनाए हुए है। मेरा पहले एक पाँव खराब हो गया था, फिर उसको कटवाना पड़ा, फिर मैं नहीं चलवाती थी, उसकी वजह से दूसरा पाँव भी खराब हो गया, मुड़ गया। फिर हर जगह दिखाया लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। संस्थान ने उसके एक पैर का निःशुल्क ऑपरेशन करके उसे सही किया और दूसरा नया पाँव लगाकर उसे जिंदगी की सौगात दी। यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और सीधा कर दिया उसको, फिर अब मेरे को चलने का बना दिया है। संस्थान ने उसे चलने की शक्ति दी, जिसके लिए वो संस्थान को बहुत धन्यवाद देती है। हर संस्था सेवा को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को चलने का भी बनाया। Due to the recent demonetization drive, our donations have severely come down. And to carry out free of cost activities for specially abled and poor people, we need funds on daily basis. So we have planned a fundraising campaign across the globe. Request your support and cooperation for the same, be it through stay and food facility, local travel or liaising with your near and dear ones, so that the people who will be traveling can enlighten them about the welfare activities of Sansthan. During this campaign, Mr. Prashant Agarwal will also be traveling to some of the countries and will also meet at a common place on any one of the Sundays during the tour period. Also, it is our sincere request that if you want to volunteer your service in your country for raising funds for this noble cause, you can contact us on 919530469374. Email relation@narayanseva.org. Humble appeal for disabled and handicapped children. For 101 children, 4,100 Great Britain pound. For 40 children, 1,775 pounds. For 5 children, 245 pounds. For 1 child, 60 pounds. Narayan Seva Sansthan UK, charity registration number 1149630. You can deposit bank account of Narayan Seva Sansthan UK
Bank name Lloyds, sort code 309290, account number 27364568. The donors are requested to intimate about the donation amount deposited to the UK office of Narayan Seva Sansthan, 12 Melton Road, Leicester, LE4 5E4. Telephone number 0116 3800 212. Donors around the world can directly contact for donation and queries. Sevak Prashant Bhaiya, Global President, Narayan Seva Sansthan, +91 99 287 4444. Donation for foreign donors. For online donation using debit card, credit card facility of foreign banks, donors can use the Bill Desk Gateway on www.narayanseva.org by clicking on Foreign Donors. The donation done via this mode will be entitled for receipt from Narayan Seva Sansthan, India under FCRA category. Our email address info@narayanseva.org. Our website www.narayanseva.org. Our India address Narayan Seva Sansthan, Sector 4, Hiran Magri, Udaipur 313002, Rajasthan, India. कोई सहारा। Keep in touch with